Hello students, today we will do the further topic of this chapter, that is adaptations. हमने पहले डिस्कस किया था कि what is adaptations. Adaptations we discussed the adaptations living in desert area like camel, then the adaptations in the region of the polar, how the polar bear is living there. Adaptations का मतलब मैं again repeat करती हूँ. Adaptations means the movement, the changes in the structure of the animal. It might be structural change, it might be the behavioral change, so that it can live comfortably in that particular habitat. Habitat का word मैं use कर रही हूँ, so that it can live, survive, अपने लिए खाना, पानी, protection, everything. So वो उसके adaptations हुई. We read about the adaptation in the camel, how it is adapted so that it can live in the desert area. Hump होता है उसमें, जिसमें fat deposited होता है so that it can live for longer time without water and food. Same as polar bear है, which can live in the winter region. It has fur on it. So both the structures are different. हम उनको inter conversion या उनको दूसरे स्टेट में चेंज नहीं कर सकते. एज फॉर सेंस हम कैमल को विंटर एरियाज में नहीं रख सकते ज्यादा टाइम तक. सेम एज पोलर बेयर्स को नहीं रख सकते. क्यों? उनके अडाप्टेशन, जहाँ पे उसके बहुत सारा पोलर बेयर पे फर है, तो अब उस पर्टिकुलर एनिमल को हम अगर डेजर्ट में रखेंगे तो वो गर्मी से वैसे ही मर जाए. एंड सेम एज कैमल, उसका बॉडी डिफरेंट है. अगर उसको हम विंटर सेक्शन में रखेंगे तो वो कोल्ड में अडेप्टेड नहीं है. So different eyelashes difference होती है, so that sand जो उगती है desert में, it can protect it. Then the foot pad movement, कितना heat में they are moving it out, so that is also adapted. So today we will do with the adaptations further in the amphibians. Amphibians means empty का मतलब होता है half. So it means that half living on land and living in water. Means half living इस particular animal की, वो आधे टाइम तक पानी में रह सकता है, आधे टाइम तक लैंड में रहता है. उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, दैट इज द फ्रॉग, सैलमेंडर, देन न्यूट्स होते हैं, टोड्स होते हैं. फ्रॉग को लेकर मैं अब आई टेल यू दैट फ्रॉग द इमैच्योर स्टेज मतलब जो टैडपोल वाली स्टेज होती है, दे लिव इन वाटर. अब वाटर में रहने के लिए it needs gills to respire. respiration करने के लिए उनमें gills होते हैं, जैसे fishes में होते हैं. देखो fishes adapted है ना पानी में रहने के लिए, so it has gills. Same as tadpole has gills to live in water. Then if it becomes adult, then it lives on land. So when living in land, it has lungs or the skin. It means that it can live both in water as well as on land. So adaptation as well as frogs आपको हमेशा रेनी सीजन में दिखेगा, है ना. अभी आपको कहीं नहीं दिखना. It means that frog is under the long sleep, and long sleep or the summer sleep भी बोलते हैं हम उसको. It is called as estivation. हमने कल वर्ड यूज किए थे दो. One is estivation and other is the hibernation. Hibernation होता है winter sleep. कोई एनिमल विंटर स्लीप में जाता है, उसको वो ठीक नहीं लगता है. एंड सम एनिमल्स गो टू लॉन्ग स्लीप, समर स्लीप, दैट इज कॉल्ड रेस्टिवेशन. इट मींस दैट फ्रॉग हाइड अंडर द वाटर और अंडर द मड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड कम्स अगेन बैक ड्यूरिंग द रेनी सीजन. सो दैट इज कॉल्ड एज द एस्टिवेशन में चले जाते हैं these. एंड वी कैन सी दैट द स्किन ऑफ द फ्रॉग कैसा अडेप्टेड है. स्किन ऑफ द फ्रॉग इज वेरी मॉइस्ट, है ना. उसको हम पकड़ते हुए तो एकदम से वो स्लिप ऑफ हो जाता है, मॉइस्ट होती है, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं उनकी बॉडी में. सो व्हाट हैपेंस दैट वो ग्लैंड्स उसको स्लिपरी बनाता है, सो दैट वाटर ड्राई ना हो जाए, उसके वाटर डिपॉजिट रहे वहां पे ऊपर उसकी स्किन. सो दैट आल्सो हेल्प्स देम टू लिव ऑन लैंड. और वो एक तरह से प्रोटेक्शन भी हो गया कि नो वन कैन इजीली गेट ग्रैब ऑफ फ्रॉग. Then amphibians do not have scales. Scales नहीं होते. जैसे scales हमारे snakes हो गए,
बॉडी में, या फिशेस हो गए, इन सब के ऊपर एक हार्ड स्केल्स होते हैं इस तरह से, जैसे अगर हम उसको टच भी करेंगे we feel that particular scales. So frog doesn't have that scales. Then we come to the adaptation. ये था अभी तक का adaptations. Result क्या कर लिया हमने, polar region में कर लिया, amphibians का कर लिया. Now the adaptations due to food habits. Adaptations फूड हैबिट्स को लेके क्या, सबसे पहले फूड हैबिट्स की अडेप्टेशन में स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा, टीथ को लेकर चेंज होगा, क्योंकि ये टीथ है जो खाने में हेल्प करेगा. आप देखना, जो खाने में हेल्प करेगा, सबसे पहले हम यूजुअली एनिमल्स को डिवाइड करते हैं. तो हम एनिमल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हर्बीवोरस होते हैं. हर्बीवोरस जो घास खाने वाले, हर्बीवोरस. अब जो घास खाने वाले हो, स्पेशली द वन हु आर ईटिंग द ग्रासेस that are having developed or sharp incisors. जो टीथ होते हैं ना आपके सबसे आगे वाले चार, देखना वो सब आगे आगे से पॉइंटेड नहीं होते, क्या होते, ब्रॉड होते हैं. सो दैट आर ब्रॉड. काउ, बफलोज, शीप, इन सब के ये टीथ जो होंगे वो ब्रॉडर होंगे. इट मीन्स दैट इट विल हेल्प देम टू कट द ग्रासेस फ्रॉम द ग्राउंड, ब्रांचेस से लेने के लिए. सो हर्बीवोरस के इंसीजर्स शार्प होते हैं. ओके. एंड कभी भी देखा होगा काऊ या बफलो को स्पेशली, वो क्या करते हैं, बहुत देर तक मुंह को चलाते रहते हैं. सो दे eat that particular grass for longer time, so that chewing process is known as gnawing. word use करते हैं उसके लिए. Okay, so herbivorous, and as well as they have strong molars also. जो आपके सबसे पीछे वाले टीथ होते हैं, molars, back side that are called as molars. So that are also developed. Molars are usually 4 cornered वाले teeth इस तरह से. Okay, then elephants. इसके एग्जांपल एलिफेंट होगा. एलिफेंट का आपने देखा होगा, तो जो बड़े बड़े टीथ होते हैं that are not canines, इस तरह से बड़े से टीथ होते हैं. These are the incisors, जिनके लिए इनको मार्क भी दिया जाता है. Okay, and they have the trunk region from which, with the help of which they break the stem, get grab or break the branches of the trees, and with these teeth they help themselves to eat it. Then termites, जो insects हैं, they usually feed on, termites जो हैं, they feed on wood. आपने देखा होगा where moisture is too much, आपके घर में कई बार लकड़ी खराब हो जाती है, बोलते हैं. So that is the termites will attack it, because termites के stomach में wood content बहुत अच्छे से digest होता है due to the enzyme that is called as cellulase. Cellulose खाते हैं ये, तो cellulase enzyme में present होता है. Wood is made of cellulose. तो बहुत अच्छे से, जब हम लोग नहीं कर सकते हैं इसको digest. Then next is the carnivorous. ये हमारा according to the teeth section की बात कर रहे हैं, तो herbivorous. Second हमारे हुआ, that is the carnivorous. Carnivores, again name itself, carni, canines. Canines कौन से टीथ हुए, आपने पीछे चैप्टर में किया था. आफ्टर इंसीजर्स, ये जो फ्लैट होते हैं इंसीजर्स, इनके बाद में देखना आप फोर्थ आफ्टर फोर्थ द पॉइंटेड एंड वंस वाले, इस तरह से जो आपकी टीथ हुए जो पॉइंटेड है, that is the canines. Now the one which are having the strong canines, they help them to tear the meat and flesh. So they have sharp canines, longer canines, as a both of them. Okay, so these canines help them to feed on the, as well as flesh and meat, as well as they help to protect also. So birds की बात करें तो birds में कैसे, the birds which are carnivorous means which feed on the meat and flesh, like vultures, hawks, they have pointed and strong feet
उनके जो फीट्स होते हैं, पॉज होते हैं, क्लॉज होते हैं, दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये मसल्स बहुत डेवलप होते हैं जिसमें वो किसी को पकड़ता है, स्नेक को पकड़ना। एज वेल एज दे हैव अ स्ट्रॉन्गर आउटसाइड क्लॉ दैट इज कॉल्ड एज टेलून। ये हमने भी पहले पढ़ा था। सो अब इसमें एक और अडेप्टेशन बर्ड्स में क्या होगी, दे हैव स्ट्रॉन्ग राउंड बीक। बीक आपने देखा होगा, देखना स्पैरो की बीक इस तरह से होगी, छोटी सी। पैरट की होगी बिल्कुल राउंड, क्योंकि वो ग्रेन खाता है, बट इस तरह से। एंड द ईगल हैव अ स्ट्रॉन्ग वाला, बिल्कुल टिप पे उसका ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। सो वी कैन से दैट carnivorous as for lions, tigers, okay, wolves, they have the powerful jaws as well as the pointed sharp canines to tear the flesh. स्नेक्स की भी बात करते हैं, स्नेक्स में भी ये पार्ट बहुत डेवलप होता है, बट स्नेक्स क्या काम करता है, स्नेक के इस इंसीजर्स के इस तरह से अगर कोई इंसीजर है, उसमें अंदर एक पाइप जैसा आप बोल सकते हैं, ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो जब भी ये इंसर्ट करता है, बोलते हैं ना सांप काट गया, तो सांप जैसे ही अपने टीथ डालेगा किसके अंदर, तो वो एज एन इंजेक्शन इस ग्लैंड से वो पॉइजन को सीक्रेट का आउट करता है, और होता है यहाँ पे, वो उस पॉइजन को सीक्रेट आउट करता है जिससे कि वो किसी को किल कर सकता है। सो स्नेक्स यूज, they are called as fangs. These teeth have the fangs. Now coming to the omnivorous. हमने पढ़ लिए कार्निवोरस, हमने पढ़ लिए हर्बीवोरस। अब हम आते हैं थर्ड वाले में, दैट इज द omnivores. Omnivores are the one which feed both on plant as well as in meat and fleshes. As for sense, bear हो गए, humans हो गए, omnivores are adapted for both the carnivores and herbivorous type of food. Means इनके incisors भी डेवलप होंगे, इनके पास में canines teeth भी होंगे, इनके पास में molars भी होंगे, इनके पास में premolars भी होंगे। Okay, so like raccoons have sharp front teeth that help them to rip apart mice and swallow the prey. So we can say that other animals like bear हो गया, है ना, humans हो गए, we have strong teeth, so we can eat both the things. That is your choice if you don't eat the non-veg part, but we have that body is adapted to eat both the type. क्योंकि humans का जो pre historic time था, that was monkeys, from monkeys later on changes हुए, अडाप्ट हुए। monkeys भी किसी टाइम में एक में वो adaptation आई होगी, that they are from pre human से वो human बने, तो उनमें बहुत सारे changes आए कि today you can see yourself as a human state। नहीं तो कुछ कुछ monkey जैसे ही लगते हैं कईयों के। कभी आपने देखा होगा अफ्रीकन का फेस स्ट्रक्चर अलग है, चाइनीज का फेस स्ट्रक्चर अलग है, so that is what, that is the different human race जो डेवलप हुआ from monkey to the humans. Now how the animals adapt for protection. अभी हमने बात की adaptations for the food habits, अब हम बात करते हैं adaptations for protection। अब क्या चेंजेस आए कि उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। प्रोटेक्शन में सबसे अच्छा वाला एग्जांपल हमें पता चलता है, यहाँ पर अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, दैट इज फॉर द कमेलियन, या फिर क्या बोलते हैं उसको, गिरगिट, है ना। गिरगिट कभी भी लैंड में बैठा होगा तो उसका मडी सा ऑरेंज सा कलर चेंज हो जाता है, वो कभी लीफ के ऊपर बैठा होगा तो ग्रीनिश चेंज कर रहा है, तो वो क्या करता है, मिमिक करता है। मिमिक मीन्स किसी की कॉपी करना। तो वो क्या कर रहा है, स्किन का कलर, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है कि वो उसको एज अपने आप को बचाने के लिए, उस प्रेडेटर होते हैं जो उनपे अटैक करते हैं, प्रे के ऊपर प्रेडेटर और अटैकर से, तो वो अपने आप को बचाने के लिए करता है। ग्रास हॉपर्स को भी देखना आप, लीव्स के ऊपर बैठे होंगे, ग्रीन इन कलर होता है। देन प्रेइंग मैंटिस, एक प्रेइंग मैंटिस करके इंसेक्ट होता है विच इज वेरी फ्रेंडली
बिकॉज वो जितने भी हमारे स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं ना, स्पाइडर्स एंड होते हैं, उसको खाता है। तो वो छोटा सा स्टिक जैसा इंसेक्ट, उसको स्टिक इंसेक्ट भी बोलते हैं। वो कभी ग्रीन इन कलर में मिलेगा आपको, कभी ब्लू इन सॉरी वुडिश कलर में दिखेगा, इस तरह से। आपको कई बार वो लीफ स्ट्रक्चर में भी दिखेगा, छोटा सा लीफ भी होता है। लीफ के आपको पता ही चलेगा वो इंसेक्ट है कि लीफ है। सो दैट इज कॉल्ड एज द प्रेइंग mantis। एंड दे अडेप्ट द कलर आल्सो, द camouflage वर्ड यूज करते हैं, जो camouflage या मिमिक करता है उसको बोलते हैं camouflage। चेंज करना अपना कलर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। Then animals such as zebra, tiger, polar bear, they use the color of their fur to blend with their surroundings. Zebras usually ग्रुप्स में जब अपने कहीं रहते होंगे तो they might be that उसका जो environment का कलर है उसको कोई पता नहीं करता है कि वहाँ पे zebras है। Then the sharp spines of the porcupine, आपने सुना होगा सेल जो हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उनके स्पाइन्स होते हैं बॉडी में। इससे छोटा सा एनिमल होता है, और अगर उसको कोई अटैक करता है तो इट लीव्स इट्स स्पाइन, जैसे तीर कमान होता है ना, तो उस पर स्पाइन उस पर्टिकुलर एनी के ऊपर छोड़ देता है, सो दैट इन सब में पॉइजन होता है, सो इट प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ। देन टर्टल हाइड इन देयर हार्ड शेल्स व्हेन अटैक। टर्टल्स या टॉर्टोइस देखे होंगे आपने, उनका जो शेल होता है वो बहुत हार्ड होता है, सो दैट पर्टिकुलर टर्टल गेट्स इनसाइड दैट पर्टिकुलर शेल, इस शेल में घुस जाएगा टर्टल। सो this way, then cow use their horns to protect themselves। cows के पास में horns होते हैं, sheep के पास में, goat के पास में, they all have, means God has given them some or the other thing for protecting themselves। हाथ पाँव नहीं है तो क्या हो गया, they have that particular any kind of a structural change which helps them to protect themselves। Then animals such as eels, frogs use their stripy skin to slip away from the attackers। ब्राइट कलर ऑफ लेडी फिश, या कोई बहुत ही बड़ी सी वुडन सी, आपने मोनार्क बटरफ्लाई देखा होगा, तो उसका कलर जो होता है, या टाइगर बटरफ्लाई बोलते हैं, उसका कलर बहुत अट्रैक्टिव होता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है वो कलर। बट फॉर द एनिमीज, या छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो अटैक करते हैं, उनको वो बहुत रिपेलिंग लगता है। रिपेलिंग मीन्स वो उनसे डरते हैं। सो दैट इज समथिंग, दैट ब्राइट कलर दैट इज वार्निंग द प्रेडेटर that they are poisonous। Then coming to the care and concern of the for animals। Now at last, आपने घर में अपने डॉग्स भी रखे हैं, कहीं में फिशेस रखी हैं, कहीं में बर्ड्स रखे हैं, but all animals have the right to live in freedom। But some of the domestic animals like cow, buffalo, sheep, people used to feed them, and what they make them domestic so that they can use the milk, butter, ghee, uska every part, every byproduct, as well as cow dung bhi hota hai, that is used as a manure। So we should take care of them, we should give them proper, अब उसमें क्या आप ध्यान दोगे, take care of them, how, clean their shelter, then give proper food। ऐसा नहीं वो घासी खाएगा, they have a particular nutritional food also nowadays, like dogs के लिए भी pedigree है, जैसे जैसे proper nutritional food for domestic animals like cow, buffalo के लिए भी provided है, so we should give them। Then we should clean their place of wherever they are living in, it should be very airy, ventilated, they should not feel congested over there। We should take care during the summer and the winter season, how they are living, proper care of water, what they are drinking it out, proper care of their vaccination if required, because any kind of disease also which can affect them। We should clean their food if required। So these are the things which people or the one who is actually making them domestic should take care of। Now, one thing two things are there, not one thing, that
the animals you see in national parks and one in sanctuaries. What is the difference between the sanctuaries वाले animals और national park में? पता है आपको? Parks में the if you are going in the park, you will see the animals in cages. सब एक एक केज में होंगे और वो जो एरिया होगा द एरिया विल बी वेरी स्मॉलर. कोई बहुत बड़े एरिया में वो केज नहीं बनाए होंगे तो कुछ एरिया लिमिटेड होगा एंड ऑल द एनिमल्स विल बी इन केज. मतलब the one who is taking care of have to give them food, have to give them proper care, water, cleanliness, everything. That particular whoever is the head or the person or the people have to take care of this. The centuries क्या होती है? Centuries is the open area, open habitat. It means that the area will be very wider and the animals which are living there will be living in an open habitat. It means that अगर tiger वहाँ रह रहा है तो it will have deer also to eat. It will have the grass also. Deer will have the grass also to eat. So एक बड़ा natural सा environment में the animal will be living in a natural environment. समझ लीजिए वो एक forest में ही रह रहा है. But गवर्नमेंट ने कुछ टैग लगा के उसको बाउंड्री को बंद कर दिया एंड ऑल द एनिमल्स आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया. केज नेशनल पार्क्स में क्या होता है? एक एक केज है, सबको दिया है भाई उसमें ही रहना है, इनसे बाहर नहीं निकलना. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल सेंचुरीज एंड द नेशनल पार्क्स. एंड सेंचुरीज में हम अगर देखने जाते हैं तो हम केज में जाते हैं सो दैट नो वन कैन हार्म अस. सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ नेशनल पार्क एंड द sanctuaries. Hereby we finish with the chapter of adaptations. Adaptation in animals, in different animals like terrestrial, aquatic, this arboreals. So if you have any kind of a problem, you can ask me. And thank you for